With reference to Andaman Nicobar Islands, which of the following statements either are correct? 10-degree channel separates Andaman Islands in the north from Nicobar Islands in the south. Saddle Peak is the highest peak at easy question. A normal geography question. 10-degree channel separates Andaman and Nicobar Islands. Saddle Peak, highest peak of Andaman and Nicobar Islands. Saddle Peak, jar height which is 730 meter. It is located in North Andaman. Uttar Andaman रे अछि. It is the highest peak of Andaman Nicobar Island. पूरा correct अछि. एटा तो correct अछि. 10-degree channel टा 10-degree channel out of Konkan passage. 10-degree channel टा separate करे Andaman से Nicobar को. Out of Konkan passage separate करे ग्रेटर अंडमान को लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान को सेपरेट कर बोथ आर करेक्ट अब एटा कहीं न्यूज रे थिला बिकॉज़ से जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट था जोटा कि बहुत दिन हलाने 4-5 वर्ष हलाने एटा न्यूज रे अछि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट निकोबार आइलैंड रे जोटी कोन करा दिबो एयरपोर्ट्स करा दिबो सिटी डेवलपमेंट करा दिबो पोर्ट करा दिबो एमती करबी पाखा पाखी 75,000 करोड़ और 72,000 करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था तापने एटा न्यूज रे थिला ओके recently 3 kilo area was in the news in the context of red hole mining. Red hole mining विषय रे already दीटा ना गोटे क्वेश्चन हम already कर सारिछु red hole mining ऊपर 3 kilo area was in the news red hole mining 3 kilo area टा होची सेटा जोटा हम आसाम रो गोटे डिस्ट्रिक्ट रे हला रेड होल माइनिंग होतला और से जो लास्ट क्वेश्चन गोटे डिस्कस करथिला आसाम रे ओके एटा डिस्कस कराइ से जो रीजन टा को 3 किलो एरिया बोली कुहा जाय इन आसाम 3 किलो एरिया माने सेटा अनस्टेबल एरिया गुरा ना दैट इज व्हाई हम कहथिले जे सेटा रेड होल माइनिंग करा जाय नॉर्मल माइनिंग करा जाय नहीं तो नॉर्मल माइनिंग पे सेटा उपयुक्त एरिया नहीं Which of the following scales measures small to medium earthquakes based on seismic wave amplitude? Small to medium earthquakes to seismic waves amplitude based on seismic wave amplitude. छोट किंबा मध्यम धरणर अर्थक्वेक को मेजर करा जाए आमे अर्थक्वेक पढ़ी सारिछु ज्योग्राफी रे जियोमॉर्फोलॉजी रे पढ़ाई सारिछु अर्थक्वेक्स रे आमे पढ़िछु दुटा टाइप रो स्केल हिजनी गोटे होते रिचर स्केल हिजनी गोटे होते मर्कली स्केल हिजनी रिचर स्केल रे स्केलिंग टा 9 दिया जाए जेतल कि मर्कली स्केल रे स्केलिंग टा 12 दिया जाए रिचर स्केल रे बार स्केलिंग का जोटा जाए मैक्सिमम नंबर 0 to 9 दिया जाए मर्कली स्केल रे 0 to 12 दिया जाए तो बड़ा धरण नॉर्मली रिचर स्केल मर्कली स्केल रे टिके डिफरेंस अछि रिचर स्केल टा मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी को मापे और वेव्स रो और मर्कली स्केल टा तार जो डिवास्टेशन को मापे और ऑन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन तो small to medium earthquakes are normally based upon what Richter scale. Okay, large devastating earthquakes are normally measured through a Mercalli scale. Intensity of the earthquake, how devastating the earthquake was. Which of the following statement is true regarding seismic waves? Body waves travel through Earth's interior and are faster than surface waves. Body waves travel slower than surface waves, cause more damage. Surface waves travel through the Earth's interior and arrive before body waves. Surface waves travel at the speed as body waves but cause less damage. P waves, S waves, L waves. Rayleigh waves, log waves.
डिस्कस करिछु ना नहीं सरफेस वेव्स गुड़ा का पुणी दी प्रकार था रेलिंग वेव्स एंड लॉग वेव्स अर्थक्वेक रो वेव्स गुड़ा को हमें दुई प्रकार को गोटे होची बॉडी वेव्स गोटे होची सरफेस वेव बॉडी वेव्स कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स पी वेव्स एंड एस वेव्स ओके जोटा सरफेस को एट द एंड पहुंचे ताको हमें कहू एल वेव्स ओके जहार फ्रीक्वेंसी कम थाए वेवलेंथ बेसी थाए ओके पी वेव्स एस वेव्स रो फ्रीक्वेंसी बेसी थाए वेवलेंथ कम थाए okay p waves s waves travel faster than l waves are the slowest এটা সব ডিসকাস করিছু okay body waves মানে p waves s waves travel through earth's interior and are faster than s waves okay surface wave केमती अर्थ रो इंटीरियर हो सरफेस वेव टा अर्थ रो बाहर माने सरफेस रे अर्थ रो भीतर जोटा जाए जोठू अर्थक्वेक जनरेट कला हाइपो सेंटर ओके बा seismic focus रू सेठू जो गुड़ा का ट्रैवल करूची अप टू द सरफेस थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ दैट इज बॉडी वेव्स p waves s waves थोड़ा फास्टर था दैट इज व्हेन दे रीच फास्ट एटा सब एबे जो रिसेंटली अर्थक्वेक्स हिथिला एबे का तो सेटा हम जनवरी मास रो डिस्कस करूछु ना सेते बेले नेपाल चाइना आडे अर्थक्वेक हिथिला हिमालयन रीजन नेपाल चाइना रे अर्थक्वेक्स उडा रही एट दैट टाइम with reference to Pulicat Lake. Which of the following statement is are correct? It is the second largest brackish water lake in India after Chilika Lake. Stretches across Andhra Pradesh, Tamil Nadu, with over 90% of the lake area situated in Tamil Nadu. Brackish water, that is the intermediate between salty water, saline water and fresh water. जति कि lagoons अच्छी चिलिका ओके कि एटा हो पुलिकट हो कि भेमबनंत लेक हो केरला रे okay they are brackish water lakes because they are in contact with the sea water and fresh water is also falling in high amount rivers गुड़ा का पड़ुछ that is why saltiness decreases कोटा ठीक अछि दुईटा तो भूल अछि stretches across Andhra Pradesh Tamil Nadu ठीक अछि with over 90% in Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश रे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जाउची पुलिकट लेक रो के पुलिकट लेक टा पूरा कोस्टल बॉर्डर रे अछि और कोन सॉरी कोस्ट लाइन रे अछि और ए जगह रे रहला पुलिकट लेक दैट इज रामसर साइट ओके जहार हल्का किछि पोर्शन खाली तमिलनाडु रे जाउची बाकी रेस्ट जोटा सेटा आंध्र प्रदेश रे जाउची लाइक दिस फर्स्ट ऑप्शन टा ठीक अछि ना पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक चिलिका होची लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ओके और लार्जेस्ट इनलैंड लेक सोल्ड सेलाइन लेक कोटा हमर जो संभार लेक टा इनलैंड लैंड भीतर जोटा समुद्र को लागि दे ओके बोथ आर रामसर साइट्स पुलिकट लेक इज आल्सो रामसर साइट चिलिका लेक इज आल्सो रामसर साइट ओके 96% एरिया देखो ना आंध्र प्रदेश रे जाउछ okay flamingo festival will celebrate the arrival of migratory birds especially flamingos okay flamingos देखि ना बड़ बड़ बग भलिया थांती लार्जर साइज रो पुलिकट लेक
ओके नेलापट्टू बड़ सेंचुरी जमती आमर चिलिका लेक इज एज ए होल इज ए रामसर साइट तारी भीतर गोटे बड़ सेंचुरी अच्छी नलगड़ बड़ सेंचुरी आइलैंड्स गुड़ाक भीतर ओके सिमिलरली आमर पुलिकट लेक रे भी कौन से टाइप गोटे सेंचुरी अच्छी नेलापट्टू बड़ सेंचुरी नेलापट्टू बड़ सेंचुरी इज द लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट फॉर स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स ओके इन साउथ ईस्ट एशिया माने ये जो प्रजातिर पेलिकन्स माने आसंती पक्षी माने हला स्पॉट बिल्ड माने स्पॉट्स थाए तांकर फ्रंटर स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स ओके साउथ ईस्ट एशिया रे जते आसुचंती सबुठु बेसी एई नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी को आसु जेति बेटा फेमस पुलिकट लेक रे अछि जेमति नलबण आइलैंड टा चिलिका रे अछि ओके वन इज करेक्ट टू इज रॉन्ग Germany has the highest number of dams in the world. In India, Gujarat has maximum number of large dams. पृथ्वी रे सबुठु बेसी नंबर ऑफ डैम्स अछि जर्मनी रे भारत रे गुजरात रे सबुठु बेसी नंबर ऑफ डैम्स अछि लार्ज डैम्स वर्ल्ड रा टॉप 3 होजंदी डैम्स रे को माने यूएसए हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स तापर चाइना तापर इंडिया टॉप 3 होजंदी नंबर ऑफ डैम्स रे यूएसए चाइना एंड इंडिया ओके ना चाइना यूएसए इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड आफ्टर चाइना चाइना एटा फर्स्ट यूएसए सेकंड इंडिया थर्ड हाईएस्ट इंडिया ओके 4407 लार्ज डैम्स अछि तो सेटा इनकरेक्ट अच्छी वन टा टू टा हो जी कोन नॉट करेक्ट महाराष्ट्र हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड गुजरात तो डैम संख्या रे भारत रे होची महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड गुजरात 1 2 3 बोथ ऑप्शन आर नॉट करेक्ट एटा जो न्यूज नथिला कि चाइना गोटे बड़ डैम बनैबो बोली सब पृथ्वी रो सब बड़ डैम बनैबार माने इनिशिएट करिबो बोली जो हमर ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर सैंडको रिवर ऊपर तापर टाइबेट और न्यूज थिला ता सहित रिलेटेड आ with reference to polar vortex namaskaram consider the following statements. It is a large area of high pressure cold air that swirls around the polar region. A strong and stable polar vortex keeps the jet stream traveling in the circular path around the planet. Polar vortex जानिबा जो माने जानिछे जानिबा नवा जिंस जानिबा polar vortex polar vortex गुटे एक्सेप्शनल जिंस हमें पढिछु polar रीजन रे को प्रेशर रहे हाई प्रेशर रहे polar रीजन रे बहुत बड़ एरिया सब हाई प्रेशर रे थाए बोली नॉर्मली हमें पढिछु बट सेही पोलर रीजन रे कोन हुए गोटे छोटिया लो प्रेशर भी क्रिएट ओके गोटे छोटिया लो प्रेशर भी क्रिएट और ता जो ये पोलर vortex टा क्रिएट कोन से पोलर vortex एटा आर्कटिक रीजन रे जमती एटी देखि छी आर्कटिक रीजन आर्कटिक पोलर vortex इज ए स्ट्रांग बैंड ऑफ विंड्स इन द स्ट्रेटोस्फियर ओके सराउंडिंग द नॉर्थ पोल 10 to 30 miles above the earth surface पोलर vortex टा कोठी क्रिएट होछ एटा स्ट्रेटोस्फियर रे क्रिएट होछ स्ट्रेटोस्फियर माने ट्रोपोस्फियर ऊपर ओके हायर एटमॉस्फियर रे आर्कटिक पोलर रीजन जो नॉर्थ पोल रे हमर पोलर रीजन टा अछि ओके तारी ऊपर माने उठे एयर घूर्णन करूछ और बैंड ऑफ विंड्स आर देयर बहुत गुडा एयर
ओके सेटा भी बहुत बेसी हाइट रे 10 to 30 miles above the surface ओके तो बिकॉज एमाने स्ट्राटोस्फियरिक एयर गुड़ा तो एमाने नॉर्मली कहा सहित इंटरेक्ट करती नहीं एमाने जेट स्ट्रीम सहित इंटरेक्ट करती नहीं कहीं इंटरेक्ट करेंगे आम पढ़ु जेट स्ट्रीम कोटी फ्लो करे मनसून रे भी पढ़ाई जीवा जेट स्ट्रीम कोटी फ्लो करे ट्रोपोपॉज तले फ्लो करे जेट स्ट्रीम फ्लो अंडर द ट्रोपोपॉज और बिलो द ट्रोपोपॉज किंतु ये गुड़ाक स्ट्राटोस्फियरिक एयर गुड़ाक पोलार वर्टेक्स गुड़ाक ठीक ना किंतु पोलार वर्टेक्स जो विंड टा क्रिएट हुए स्ट्राटोस्फियर रे जेते बेले सेटा कोन थाए स्ट्रांग थाए आ स्टेबल थाए माने से पोलार रीजन रो स्ट्राटोस्फियर जदी बहुत स्ट्रांग विंड्स जदी डेवलप करिछि स्ट्राटोस्फियर ओके ताहले कोन तार किछि इफेक्ट जेट स्ट्रीम ऊपर भी पड़े ओके तार किछि इफेक्ट जेट स्ट्रीम ऊपर भी पड़े या द्वारा कौन हुए जति मन कर व्हेन द पोलर वर्टेक्स इज स्पेशली स्ट्रांग एंड स्टेबल द जेट स्ट्रीम स्टेज फार्दर नॉर्थ ओके हैज फ्यूअर किंग्स द दिस कीप्स द कोल्ड एयर कंटेंट ओवर द आर्कटिक एंड मिड लैटिट्यूड्स वार्मर देन यूजुअल ओके माने जेते बेले स्ट्रांग पोलर वर्टेक्स थिबो सेते बेले कौन हुए सेते बेले जो पोलर जेट स्ट्रीम गुड़ा था ओके पोलर जेट स्ट्रीम गुड़ा क्लोजर रहे टू द पोल्स फार्दर नॉर्थ माने कौन क्लोज टू द पोल्स ओके पोल आड़ को क्लोज रहे जिते सेटा स्ट्रांगली डेवलप कर किंतु जदि जमती यही टाइप रहा ओके माने सेकंड पिक्चर जोटा देछि सेकंड पिक्चर रे कौन है जदि पोलर वर्टेक्स टा यही भाया था वीक था मैंने देखुच ना दी प्रकार से टाइप जगह क्रिएट दीटा टाइप जगह क्रिएट पोल पाखरे ना पोल अलग अलग कि दुई प्रकार जगह क्रिएट केते हुए जिते बड़े जेट स्ट्रीम गुड़ाक माने बहुत बेसी स्पाइराली मूव करवा स्टार्ट कर स्पाइराली कहीं मूव करे आम पढ़ी स्पाइराली कहीं मूव करे गोटे आड़ कोल्ड एयर ठेलुची पोल आड़ गोटे आड़ वार्म एयर ठेलुची पढ़ी ना वार्म एयर कोल्ड एयर जो मीट करुची तारी ऊपर जो जेट स्ट्रीम टा फॉर्मेशन हुए तो गोटे आड़ वार्म एयर मूव करुची गोटे आड़ कोल्ड एयर मूव करुची कोल्ड एयर टा साउथ आड़ को मूव करुची वार्म एयर टा नॉर्थ पोल आड़ को मूव करुची आ सेमानकर मूवमेंट जेतले बहुत बेसी हुए तो पवनटा कौन है ये भाया पंखा है एडू ठेलला सेडू ठेलला देखा से माने जिगजैग फैशन रे फ्लो कर नॉर्मली जदि पोलर जेट स्ट्रीम गुड़ाक ये हुए पोलर जेट स्ट्रीम गुड़ाक जदि नॉर्मली कौन हुए कॉन्स्टेंटली बुलूछन एट हाई स्पीड बहुत बेसी जिगजैग मैनर रे बहु ना जमती फास्ट पिक्चर रे देखि तो पोलर वर्टेक्स टा कौन स्टेबल रहा माने स्ट्राटोस्फेरिक एयर टा कंटीन्यूअसली ऊपर बुलू किंतु जदि पोलर वर्टेक्स टा बेसी जिगजैग हुए बेसी जिगजैग केते बेले हो जदि बहुत बेसी वार्म कोल्ड एयर रो डिफरेंसेस बढ़ी जे कोल्ड एयर याडू ठेलुची वार्म एयर सेडू ठेलुची लाइक दैट ओके से भला जदि हुए एट दैट इंस्टेंट ताहले कौन हुए पोलर वर्टेक्स टा भी कौन दी फला हो जाए जेमती देखा जाउ भिन्न भिन्न रीजन रे दी प्रकार क्रिएट हो ओके माने बहुत परस्पर सहित कौन कहती परिपूरक जो जदि ये जो पोलर वर्टेक्स जो जिनसटा सेटा कांस्टेंट रहे ताहले जेट स्ट्रीम भी कांस्टेंटली फ्लो करे पाइप रे आउ जदि पोलर वर्टेक्स रे जदि डिसरप्शन आसिला ताहले माने जेट स्ट्रीम ऊपर इफेक्ट पड़े जेट स्ट्रीम ऊपर डिसरप्शन आसिले पोलर वर्टेक्स ऊपर तो दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड जड़े तले फ्लो करुच्ची बिलो द ट्रोपोपॉज जड़े अबव द ट्रोपोपॉज फ्लो करुच्ची
ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖ ଯଦି polar vortex stable ରହୁଛି ତା अर्थ କଣ ହଉଛି polar jet stream ଗୁଡାକ close to the pole ବହୁଛି first picture पोल ର ପାଖାପାଖି ବହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି polar vortex ଟା disruption ହଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ जो white arrow जो देखिଛି ଉପରେ ସେକେंड पिक्चर रे ସେଥିରେ cold air ଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ସାଉଥ ଆଡକୁ ମୁଭ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏ जो cold air ଟା ଏଠି ହେଲା ଏଟା ଯେମିତି ଦେଖ ଏଟା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଭିତରକୁ ବେଶୀ ପଶି ଆସିଛି ओके नॉर्थ अमेरिका भीतर को बेसी पशि आसी यूरोप भीतर को बेसी पशि आसी साइबेरिया भीतर को बेसी पशि आसी माने मोर कोल्ड एयर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका यूरोप साइबेरिया माने से भला विंटर्स मानकर कौन हम भयंकर ठंडा हम बुझीपार ना दोज टाइप ऑफ विंटर्स विल बी सीवियर विंटर्स देखो ना लेखा है United States of America has experienced one of the most severe winter storms, likely over माने गोटे गत 10 वर्ष भीतर largely attributed to polar vortex. ओके माने polar vortex रे disruption आसीबा जोगु से टाइप रो जिंस होइछ. ओके तो polar vortex टा कोन इज large area of low pressure cold air that swirls around the earth polar region. सेटा भी कोठी देखा जाय stratosphere रे देखा जाय not in the troposphere. ओके तो आमे पढिछु जे कोन देयर इज अ हाई प्रेशर इन द पोलर रीजन सेटा ट्रोपोपॉज तळे ट्रोपोपॉज ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर सेठी कोन गोटे लो प्रेशर डेवलप करूछ वार्मर एयर्स इन द स्ट्रेटोस्फियर सेटा पोलर vortex को क्रिएट कर माने सेठी गोटे एयर टा वार्म रहउची और तारि चारि पटे कोल्ड एयर गुडा को बुलुची लाइक दिस से जते बेला जे कांस्टेंट थिबो जेट स्ट्रीम कांस्टेंट थिबो से जते बेले बेसी कोन वीक हे जीवो ताहले जेट स्ट्रीम गुडा को नॉर्थ साउथ याडे साडे खिंची हेबा स्टार्ट यदि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दीटा पड़थिले ना कोल्ड फ्रंट जदि बेसी आगो को पळे आसिला तो नॉर्थ अमेरिका यूरोप बा कनाडा यूरोप यूएसए साइबेरिया ए एरिया मानकर भयंकर शीत विंटर स्टॉर्म ब्लिजार्ड स्नो एटसेट्रा देखा आ जदि वार्म फ्रंट बेसी मूव करि जाय वार्म एयर बेसी मूव करि जाय ताहले कोन होबो से रीजन गुडा को नॉर्मल विंटर्स थारो कम ठंडा फील करिवे बुझी पारले दीटा थाए ना वार्म एयर कोल्ड एयर मीट करे वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट जदि कोल्ड एयर बेसी रही गला ताहले कोन होबो ठंडा बेसी होबो वार्म एयर बेसी स्ट्रांग रहिला टिके नॉर्मल विंटर्स थारो कम ठंडा होबो ओके 2 is correct देछि when the polar vortex is strong and stable it keeps the jet stream okay traveling in a circular path around the planet सेटा कहिछु it helps maintain separation between cold air in the north and warm in the south ओके सेटा हमें कहि सारछ तो 2 जो ऑप्शन टा देथिला एटा ठीक अछि एटा जोटा लो प्रेशर हबो ओके now सेटा भी stratosphere is strong and stable polar vortex keeps the jet stream traveling in a circular path around the planet option 2 is correct. Consider the following countries Sudan Libya Jordan Saudi Arabia एमाने इजिप्ट सहित किए बॉर्डर करूछ इजिप्ट सहित बॉर्डर करूथबा कंट्रीज
आफ्रिका टा ए टाइप रो अछि ना नॉर्थ अफ्रीका जो तुम देखि छ आफ्रिका ए टाइप रो अछि सिनाई पेनिनसुला में पढ़ुछु आगर बारंबार आफ्रिका एमती गला एटा होची इजिप्ट टा भले अछि इजिप्ट एटा इजिप्ट जे ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री काली भी कहथिले सिनाई पेनिनसुला टा एशिया अंडर रे जाए सेटा भी इजिप्ट रो किंतु एशिया अंडर रे जाए इजिप्ट अफ्रीका अंडर रे जाउछ आगे इजिप्ट रो आखरे पाखरे कोन कोन अछि इजिप्ट रो आखरे पाखरे लेफ्ट साइड रे गोटे कंट्री लागि छि लीबिया तळे लागि छि सुदान ओके लीबिया और सुदान एपटे लीबिया लागि छि एपटे सुदान लागि ओके तापरे एठी हमर कोन दीटा गल्फ अछि गोटे गल्फ ऑफ सुएज आ गोटे अछि गल्फ ऑफ अकाबा काली भी कहैतिला याडे गल्फ ऑफ सुएज याडे गल्फ ऑफ अकाबा ओके तापरे याडे हमर रेड सी टा रहला एटा मध्य रेड सी अछि एई साइड रे सऊदी अरेबिया रहला एठी जोर्डान रहला ओके सऊदी अरेबिया एंड जोर्डान दीटा माने एबे एटा माने करंट अफेयर्स रे जतला न्यूज रे थाए तो सेई टाइम रे माने मैपिंग फैपिंग के देखिबार नॉर्मली बट एटा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो एक्चुअली इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन एटा इजी क्वेश्चन नो माने बहुत भितरिया मैप एटा एक्चुअली स्किपेबल क्वेश्चन एटी कोन हिची कहले ई भितरे एई जगह रे एई जगह रे इजराइल पसी आसी भितर ना जोर्डान लागि छि माने सिनाई पेनिनसुला को ना ही आमर जो सऊदी अरेबिया लागि पारि तो मझे इजराइल पसी आसी जो पार्ट एटी इजराइल टा अछि अब इजराइल टा जोर्डान को लागिबा को दोनी सिनाई पेनिनसुला सहित ना ही जोर्डान लागि छि ना सऊदी अरेबिया लागि छि ओके जोर्डान सऊदी अरेबिया हटि गले 1 to आंसर हबो with reference to the sex ratio in India. Sex ratio is defined as the number of female births per 1000 male births. Census 2011 अनुसार Kerala has the highest sex ratio in the country. सेक्स रेशियो आम केमी मापू प्रत्येक हजार मेल रे केते फीमेल कर जन्म हो वर्ल्ड वाइड 100 रो भी मापंती ओके 100 फीमेल रे केते मेल हो ए टाइप रो भी निया जाय गुडा जगह किंतु आम इंडिया रे कोन करू सेक्स रेशियो टा हजार मेल रे केते फीमेल होतंती सेटा ही निया जाय ओके the sex ratio of birth defined as the number of female births as per the 1000 male births एटा कोन लिखिला कि अलगा किछि लिखि छी sex is defined as the number of female births as per 1000 male births ठीक तो लिखि कोन प्रॉब्लम है नॉट करेक्ट लिखि sex ratio at birth एथि बोधे ये अछि एटा बोधे प्रॉब्लम करछि सेति में नॉट करेक्ट दिस ओके सेक्स रेशियो आउ सेक्स रेशियो एट बर्थ दीटा अलग अलग जिनिस सेति में भूल देछि गोटे सेक्स रेशियो एट बर्थ देछि ना गोटे सेक्स रेशियो खाली को तो दीटा भीतर कोन टिके टिके डिफरेंस रह गया देयर आर सम डिफरेंस okay sex ratio refers to the ratio of males to females in the entire population निर्दिष्ट एज गिवन एज रे एडल्ट सेक्स रेशियो जहाँ को कहा जाए ओके
सेटा होची नंबर पॉपुलेशन रे मेल फीमेल नंबर को कंपेयर करा एटा एट बर्थ कंपेयर करा जन्म बेले जन्म बेले प्रत्येक 1000 मेल रे केते फीमेल जन्म होछ ओके तो सेही में भूल अछि आउ स्टेटमेंट 2 टा जोटा अछि स्टेटमेंट 2 the sex ratio at all India level was 943 okay same for rural urban areas are 949 and 929 এটা 2011 ର पढिछु ଆମେ सेंसस रे ओके 943 था रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में ई भलिया रहो एटा टिके मन रखो ओके सेक्स रेशियो फॉर द एज ऑफ 0 to 19 एज ग्रुप वाज 908 एटा न मन रखले चलियो सेक्स रेशियो वाज हाईएस्ट इन केरला 1084 पुडुचेरी 10837 सबुटु कम होजी डामन ड्यू 618 ओके हाईएस्ट टा लोएस्ट टा टिके मन रखियो ओडिसा रा मन रखियो थोड़ा हेछि हमर सेंसस रो ओके बी ओनली टू ओनली मधुरे मधुरे गूगली पड़ियो ना methodology was used in the revised calculation of India's coastline length YouTube रे वीडियो देखिली हमर भी क्लास रे भी हेतिला कोस्टलाइन लेंथ इंक्रीज हावला बोली पढे जो ना नहीं बताओ straight line measurement approach was used कोइच ओके वो मेथोडोलॉजी टा आगरो यूज होतला एबे जहा को करेक्शन करा हेती बाय बेटर इक्विपमेंट्स बेटर साइंटिफिक अप्रोच सेति में भारत रो कोस्टलाइन टा बड़ माने बेसी देखैछ सैटेलाइट बेस्ड linear approximation incorporation of morphological features like bays, estuaries, inlets, tidal line measurement was used revised calculation माने आगरो नु एबे जो है एबे जो कैलकुलेशन है रिवाइज रे सेतरे कोन यूज करा जाय पढि छु एटा एबे जो हैला एबे रिवाइज बोली पचार एटा पढि छु ना सेठी कुआई इनकॉर्पोरेशन ऑफ जियोमॉर्फे माने आगरो बे एस्चुअरी इनलेट सेगुडा जो मोडा मुडी हिकी थाई कोस्टलाइन टा ताकू गणा हि नथि ओके एबे वर्तमान ताकू गणा हैला ओके ताकू कैलकुलेट करा हैला बेटर भाग India's coastline expanded almost half of just over 5 decades 7516 थिला आगरो वर्तमान केते हे गला वर्तमान हमर 11098 किलोमीटर हे गला 2023-24 okay Bengal Gujarat Goa added significantly to their shoreline while Puducherry shrunk by 10.4% okay Puducherry रो कोन हेची कम जाईछ गुजरात recalculated coastline गुडा टी मन रखि दबो एटू क्वेश्चन आसीबार चांस अछि गुजरात recalculated coastline almost doubled लागदु एबे कोन हला 2340 किलोमीटर हे गला पाखा बाकी 1200 से 2400 पाखा बाकी हे ओके सबुटु बेसी परसेंटेज वाइज इंक्रीज को कहारो हेची बेंगल रो हेची हला 157 किलोमीटर थिला गोवा पर थिला सेकंड रे लिस्ट रे एबे से 721 किलोमीटर हे जाईछ 357% इंक्रीज एटा कुहा भी हेची तुम पाकर नोट भी थिबो ताकू ध्यान देथिबो ए वर्ष क्वेश्चन शेयर करतारिबो कोस्टलाइन इंक्रीज ओके आगरो 1970 डाटा टा यूज होतुला ओके गुजरात रिटेन्स इट्स पोजीशन एट द जेमती थिला सेमती अछि रीजन्स फॉर इंक्रीज कोन हला एट्रिब्यूटेड प्राइमरीली टू यूजिंग ए न्यू मेथोडोलॉजी टू मेजर द इंडियास मैरीटाइम पैरामीटर
ओल्डर मेथड्स गुड़ाक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मापुला वर्तमान साइंटिफिकल अप्रोच यूज करा जाउछि नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉरिडोर हला कोऑर्डिनेटर्स द्वारा सेटा डेवलप होइछ ओके जो थरे बेज एस्चुअरी इनलेट्स आउट अन्य गुड़ाक जोटा मपा जाउ नथिला ताको भी निया वर्तमान ठीक ना एतरे नुआ कोस्ट लाइन जति की हला सेटा भी लिस्ट दिया है तुमको ओके गुजरात रो 2340.62 किलोमीटर हला तापरे सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की हेगला तमिलनाडु हेगला 1068.69 किलोमीटर थर्ड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन होची आंध्र प्रदेश 1053.07 किलोमीटर ओके ओडिशा हेगला हमर 480 रु डायरेक्ट पड़ला 574.7 98 नहीं केते गुटे डेसिमल देखला किलोमीटर 576 बोले ना 74 574 ओके 574.71 ना 76 केते गुटे हाँ सैटेलाइट इमेजिंग सब यूज होतिबो ना सबू को मिली मिसिकी यूज करके सब डाटा बाहर कर वेस्ट बेंगल जोटा कहले 721 तापरे डामन ड्यू ओके सबुठू एबे लिस्ट कोस्ट लाइन राज्य मानक भितर कहार अछि लिस्ट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन गोवार केते पड़िला एक्चुअली गोवाटा गोवाटा 130 थिला बोले 193.95 है तो से कौन लिस्ट कोस्ट लेंदी कोस्ट लाइन रो मान्यता से बजाय रखी एबे जदि आमे सजेबा गुजरात तापर सेकंड रे तमिलनाडु थर्ड रे आंध्र प्रदेश ओके फोर्थ रे आसी जीवो महाराष्ट्र फिफ्थ रे आसी जीवो वेस्ट बंगाल ओके फिफ्थ रे वेस्ट बंगाल आसी जीवो तापर हमर सिक्स्थ रे आसी जीवो केरला ठीक ना केरला आसी जीवो तापर ओडिशा आसी जीवो सेवेंथ रे ओडिशा सेवेंथ लॉन्गेस्ट हला ना वर्तमान 600 ये हला 571 तापर कर्नाटका ओके कर्नाटका तापर जाई कि गोवा एमती गोटे हम एटा मन रखिबे एथरो क्वेश्चन आसीबाटा प्राय प्राय फिक्स which of the following statements about Gulf of Mexico is or are correct आज ए वाला क्लास दीटा अछि हला 12 रे पुनी 11:45 रे पुनी क्वेश्चन करियो Gulf of Mexico is connected to Atlantic Ocean via Strait of Florida and to Caribbean Sea through Yucatan Channel. It is shared by United States, Mexico, Cuba. Gulf of Mexico largest Gulf of the world तो देखी चो ना नॉर्थ अमेरिका तले जोटा अछि एगुडा ही अछि ना एगुडा ही अछि हले याडे नॉर्थ अमेरिका अछि हले साउथ अमेरिका अछि एटी सेंट्रल अमेरिका अछि एटी कैरिबियन आइलैंड्स गुडा अछि एटा कैरिबियन सीटा एटा गल्फ ऑफ मेक्सिको ठीक ना क्यूबा आउ टेक्सास एटा हो यूएसए रो टेक्सास आ एटा हला क्यूबा क्यूबा यूएसए को जो सेपरेट करे से जो पानी को कोन कुआ जाय ताको कुआ जाय हमर जो एटा फ्लोरिडा स्ट्रेट फ्लोरिडा रीजन टा जाउछि सेटा टेक्सास रो फ्लोरिडा रीजन सेटा तळटा ओके एई साइड टा जोटा याको कुआ जाय युकातान स्ट्रेट बा युकातान चैनल बोली कुआ एई पार्ट को नै एटा युकातान पेनिनसुला मेक्सिको जोटी जो डायनासोर मरला बेले जो पड़थिला कोन एस्ट्रॉइड
युकातान पेनिनसुला तो क्यूबा मेक्सिको सेपरेट हो जे टी साइड टा मेक्सिको ओके युकातान पार्ट टा क्यूबा मेक्सिको सेपरेट हो जे सेटा युकातान क्यूबा यूएसए सेपरेट हो सेटा फ्लोरिडा किंतु आमको जोटा कहि कोन गल्फ ऑफ मेक्सिको कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन विया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा एंड कैरिबियन सी थ्रू युका एटा याडे कैरिबियन सेटा युकातान चैनल हेगी बा स्ट्रेट हेगी जॉइन होची आ याडे अटलांटिक ओशन ठीक अछि ओके एटा सब आमे कॉन्टिनेंट्स ओशन ए सब रे पढु शेयर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको क्यूबा क्यूबा शेयर करूची की क्यूबा शेयर करूना इट इज शेयर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको अमेरिका और मेक्सिको याकू शेयर करूची लाइबे अमेरिका कोन याकू माने रीनेम माने कोन गल्फ ऑफ यूएसए करियो बोले ना देई बोले गुटे स्टेटमेंट देखला इकोनॉमिक जोन्स गुडा को शेयर करूची बोली लेखिस ठीक अछि टूटा भी ठीक अछि क्यूबा भी शेयर करूची समुद्र ना आमे पढिछु ना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एटसेट्रा गुडा को जो पढिछु समुद्रटा ना इकोनॉमिक जोन्स गुडा को समस्त शेयर करूछु इट इज सेड बाय यूएसए मेक्सिको एंड क्यूबा माने एठू जहा पेट्रोलियम मिलिबो कि जहा माछ खर्च मारिबे जहा करिवे टोटल एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड बाय क्यूबा मेक्सिको एंड यूएस both these see ela eithire kono Mississippi the largest river of USA fall into this river okay Rio Grande seta gote river ta important river la important कोन पे ऑयल पे ला नेचुरल गैस मिले सी फूड लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्रूशियल फॉर शिपिंग रूट्स एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बेगुडा अरे बड़ गल्फ अछि अरे ए सब दिन रहिबो ऑयल नेचुरल गैस कॉन्टिनेंटल शेल्फ रे अछि ना पड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ geomorphology रे पढुछु with reference to the Yarlung Tsangpo river it originates in Tibet enters Arunachal Pradesh where it is known as Siang correct एटा सहजटा ना आउ कोन आकु बेसी गाइला टाइबेट रु बाहरी छी चेमांगदम ग्लेशियर बोली कहू अरुणाचल प्रदेश को आसुची कोन ना सटी सियांग बा ताकू दिहांग बोली कहू सियांग और दिहांग it is joined by tributaries such as Dibang Lohit called Brahmaputra ओके ब्रह्मपुत्र नाटा नॉर्मली कोटू कुआ जाय ब्रह्मपुत्र नाटा आसे कोटू हमर जो सदिया सदिया टू धुबरी ओके आसाम भीतर सदिया रो धुबरी जे जेते बेले फ्लो करूची सेति की भीतर तार नाटा होची कोन ब्रह्मपुत्र ता पूर्वरु अरुणाचल प्रदेश रे इट इज कॉल्ड सियांग बिहार ओके लोहित रिवर मिसिला परे नॉर्थ आसाम रे ताकू लुईत मध्य कुआ जाय LUIT लुईत भी कुआ जाय अरुणाचल प्रदेश रे ता ऊपर को कोन दिहांग और सियांग भी कुआ जाय ठीक ना सियांग और दिहांग कुआ जाय तापरे टाइबेट रे ताकू सैंगपो कुआ जाय यारलॉन्ग सैंगपो तापरे जेते बेले से एंटर करे कोठी की बांग्लादेश ओके बांग्लादेश रे तार बड़ ब्रांच ता एंटर करे जे कि गंगा सहित मिसे पद्मावती रिवर क्रिएट करे तो सेही जो ब्रांच ता कोन जमुना बोली कहल पड़ी जना एटा होजी भिन्न भिन्न ना गुडा का भिन्न भिन्न सेही गोटी नदी भिन्न भिन्न ना पूरा मन रख पड़ो यारलॉन्ग सैंगपो इन टाइबेट 1800 किलोमीटर तापरे अरुणाचल प्रदेश रे सियांग और दिहांग देन Assam North Assam रे it is called Luit for some time okay then it is Sadia Assam to Dhubri Assam पूरा Assam रो whole length जेतले फ्लो करूची इन Assam it is Brahmaputra after crossing Assam it gets divided into two branches गोटे बड़ा ब्रांच जोटा गंगा सहित पड़े सेटा जमुना आ गोटे छोटा ब्रांच को ओल्ड ब्रह्मपुत्र कुआ जे जोटा मेघना सहित मिस होला मिसी गला परे गंगा सहित it is called पद्मा ठीक ना किंतु पड़े को नारे समुद्र रे मेघना नारे 1 2 सादा प्लेट्यू
in the Konkan region composed of Konkan माने कौन Maharashtra Goa coastal region, western coastal region of Maharashtra and Goa. महाराष्ट्र और गोवार कोस्टल रीजन्स मानकु कोंकण बोली कहा जाए कर्नाटकार कोस्टल रीजन को कन्नड़ बोली कहा जाए केरला वालांकर कोस्टल रीजन को मालाबार कहा जाए कन्याकुमारी ठारू नहीं कृष्णा नदी जाए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन को कोस्टल रीजन्स को कोरमंडल कोस्ट कहा जाए कृष्णा नदी ठारू नहीं महानदी जाए ओके कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा आंध्र प्रदेश जोटा रहुची ताकू नॉर्दर्न सरकार कहा जाए कोस्टल रीजन्स बिटवीन कावेरी एंड कृष्णा इज आल्सो नोन एज कर्नाटिक कोस्ट ना गुडा को मन रखियो कोंकण रीजन प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ बासाल्टिक रॉक फॉर्मेशन alluvial soil deposits granite rock structures lateritic plateaus formed by erosion बासाल्टिक माने कोन जो आमे पढिछु फ्लड बासाल्ट फ्लो हेतिला बासाल्ट रॉक्स फॉर्मेशन हेछि वेस्टर्न घाट रे डेकान प्लेट्यू रे ओके लेयर लेयर रॉक्स देखा जाय ब्लैक ओके ब्लैक कलर alluvial soil deposition रिवर द्वारा हुए पटु माटी ओके ग्रेनाइटिक रॉक्स सेटा नॉर्मली कोन साउथ पार्ट रे बेसी देखा जाय जरा वेस्टर्न घाट फॉर्मेशन पढिथिले जियोमॉर्फोलॉजी रे मु कहिथिली मने पकाओ जो वेस्टर्न घाट रो साउथ पार्ट्स गुडा करे जियो कोन ग्रेनाइटिक रॉक्स बेसी देखा जाय नॉर्थ पार्ट्स गुडा करे जेहेतु सेठी कोन लावा फ्लो हेछि डेकान ट्रैप फॉर्मेशन हेछि तो ग्रेनाइटिक रॉक्स गुडा को सुपर इंपोज हे जायछि कहा द्वारा बासाल्टिक रॉक्स द्वारा ता ऊपर ऊपर पड़िथि तो एटी सादा प्लेट्यूटा कोन करंट अफेयर्स थिला सेति बा न्यूज रे आछि सादा प्लेट्यू ओके कोंकण रीजन नेसल्ड बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट याडे वेस्टर्न घाट अछि आ चित्र करबा दरकार नै जेटा देखि छ तुम ओके एटा जदी कोस्ट हला एटी वेस्टर्न घाट अछि हमर हला एटा हला सी अरेबियन सी आ वेस्टर्न घाट मझिरे जो पार्ट रहिला अब कोंकण कोस्ट कुआ जाए महाराष्ट्र रु गोवा जाए बा डामन टू गोवा कहि परिबा ठीक तो एठी कोन सादा फीचर्स गुडा को देखा जाए आर फ्लैट टॉप लैटेराइटिक प्लेट्यूज फॉर्म्ड बाय सेंचुरीज ऑफ इरोजन ओके माने 100 वर्ष धरी कोन नदी ला वर्षा जल एसेट्रा द्वारा जो कोन पहाड़ गुडा को धीरे धीरे धोई ही जाइछि ता द्वारा कोन हे जाइछि ऊपर गुडा को फ्लैट हे जाइछि एई वाला आगु प्लेट्यू बोली कोन जो पहाड़ रो शीर्ष न था जोटा कोन पहाड़ तले तले देखा जाए आ जेहेतु ए रीजन मानकर वर्षा बेसी हुए हला प्लस खरा वर्षा बेसी होतुवा रीजन मानकर हम की टाइप रो सॉइल पाउ लैटेराइटिक सॉइल पाउ पडिछु जो थरे आयरन मैंगनीज ओके एल्युमिनियम ए भले जो मेटल्स रो मात्रा बेसी था रेडिश इन कलर मानकोड़ा पत्थर ओके से भले रीजन रे कोन फ्रेश वाटर स्टोरेज बेसी रहे पथुरिया जगह हेतिबा जो ओके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दिस हैबिटेट सपोर्ट वल्नरेबल स्पीशीज लाइक इंडियन क्लैप्सेल टर्टल वाइल्ड लाइफ लियोपार्ड जैकल सेउडा को नमन रखले चलिबो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माइनिंग चली छी मानकड़ा पत्थर बाहर करूछंती ओके दुकान बाजार घर द्वार शहर ओके जोटाई कोन ए भले सादा प्लाटी गुडा को नष्ट करूछ ओके इट्स क्लासिफिकेशन एज वेस्टलैंड ओके वेस्टलैंड माने कोन जोटा कि चाष उपयोगी नु महाराष्ट्र सरकार एको कोन वेस्टलैंड भाव रे घोषणा करिछि आ एटा जेहेतु वेस्टलैंड घोषणा हेछि माने कोन याकू लोके बिंदास जहा पारले ता यूज करूछंती हो जेहेतु सरकार ही ताको वेस्टलैंड घोषणा कर सेति बेटा न्यूज रे थिला जे सरकार या ऊपर आखि पकोना with reference to the intertropical convergence zone consider the following statement it is a belt of high pressure around the earth typically located near the equator it plays a key role in the global weather patterns especially in tropical regions influencing rainfall monsoon seasonal weather changes
आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कोटी रहे जोटी स्ट्रेट सनराइज पड़े जोटी स्ट्रेट सनराइज पड़े पृथ्वी रो ओके सेटा कैंसर रु कैप्रिकॉन जाए इक्वेटर दे कि से सब रीजन रे आईटीसीजेड टा जोटी स्ट्रेट सनराइज रहे सेठी लो प्रेशर रहे सेठी कोन हुए ट्रेड विंड्स उडा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स उडा मर्ज करे एबे रिसेंटली आमे पढिछु इट इज जोन ऑफ लो प्रेशर इन द ट्रॉपिकल रीजन ठीक इट प्लेज ए की रोल इन द ग्लोबल वेदर पैटर्न्स ऑब्वियसली प्ले करे काहे ना से जो पोजीशन चेंज हुए तार इक्वेटर रु कैंसर को जाए कैप्रिकॉन को जाए ओके जहा द्वारा कोन हुए समर विंटर यही सब जिनस सीजनल चेंजेस तो हुए ता सहित कोन हुए रेनफॉल मानसून ओके यही सब जिन परिवर्तन आसे मानसून आम चार्टा क्लास पढ़ीछु हला पूरा फुल डिटेल्स रे तो 1 to both are correct अरे बी कौन देलो आंसर ओ लो देखिला सर सॉरी शक्तिमान both helatic which of the following statement is are correct about Kerch state Kerch state एटा रशिया यूक्रेन न्यूज वाला ना हमर जो ब्लैक सी अछि ब्लैक सी रे हम गोटे ज्योग्राफी रे पढिछु कोन सिनाई पेनिनसुला अछि सॉरी कोन एटा क्रिमियन पेनिनसुला अछि बोली पढिछु क्रिमियन पेनिनसुला गोटा अछि ब्लैक सी आडे कोन अछि समुद्र हमर मेडिटेरियन सी सहित भी कनेक्ट होछि रफली करूछि याडे मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर सहित कनेक्ट हेछि ओके तापरे बाकी सब तो लैंडलॉक हे कि अछि ब्लैक सी लैंडलॉक ओके लैंडलॉक रीजन टा द ब्लैक सी रो चारियाडे गुडा कंट्री अछि लाइक कोन जॉर्जिया अछि ओके तापरे तळे टर्की अछि बुल्गारिया अछि यूक्रेन अछि रशिया अछि ठीक ना तो एई पार्ट टा कोन कुहा जाय एजोब सी बोली कुहा जाय ब्लैक सी भीतर आ गोटे सी कुहा जाय एजोब सी ओके सी ऑफ एजोब और एजोब सी एटा हला ब्लैक सी एटा हला क्रीमिया पेनिनसुला ओके ई साइड टा होजी रशिया तो रशिया को क्लेम करूची ना ए पेनिनसुला टा बहुत दिन it connects the sea of Azov to the Caspian sea सी ऑफ एजोब कैस्पियन सी एटा हां केच स्ट्रेट टा जोटा पचार थिला केच स्ट्रेट एटा से केच स्ट्रेट ए पानी गुडा जोटा रशिया और यूक्रेन को सेपरेट करूछ एटा केच स्ट्रेट टा कनेक्ट सी ऑफ एजोब एंड कैस्पियन सी नो कैस्पियन सी एठी अछि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ओके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक को इतर कैस्पियन सी एटा कैस्पियन सी आउ ब्लैक सी मझे गुड़ा देश अच्छा पढ़ी आम जॉर्जिया अजरबैजान आर्मेनिया एगुड़ा ठीक ना ये सब कंट्रीज अच्छा ऊपर रशिया अच्छी तले टर्की अच्छी ईरान अच्छी ऊपर आमर काजाकिस्तान अच्छी ओके तापर इे कौन तुर्कमेनिस्तान अच्छी लाइक दिस तो it separates Crimean Peninsula from Krasnodar region of Russia. Krasnodar region of Russia. Russia रे गोटे अंचल अछि जहार नाम हो Krasnodar बोली मे भी हेइथिबो एते तो डिटेल्स मन रहबोनी Krasnodar गोटे रीजन अछि बोली एक्चुअली सेटा जो पार्ट टा जो ई साइड रशिया रो ई पार्ट टा ओ Krasnodar रीजन बोली कुहा ओके सेटा करेक्ट अछि it is a key shipping route for energy and trade in the Black Sea region. एटू है कि शिपिंग हुए वो कौन शिपिंग हुए एनर्जी आउ अदर ट्रेड ओके तो तारी ऊपर एटा न्यूज़ ता थिला कोन सेति पई एटा कोन हो आंसर एटा 3 टा करेक्ट अछि होला स्पेशली एठी ब्लैक सी टा
ए जो माने रीजन टा आहुरी भी इंपोर्टेंट कहा पाई कहलो रशिया पाई एनर्जी ट्रेड पाई इंपोर्टेंट ब्लैक सी रे भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस एटसेट्रा हुए प्लस हमर जो यूक्रेन पाई भी इंपोर्टेंट ना यूक्रेन ए साइड टा अछि यूक्रेन मेनली कोन माने ट्रेड करे व्हीट यूक्रेन इज ए माने लार्ज व्हीट प्रोड्यूसर କାହିଁକିନା ସେଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଆଡୁ ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ହୁଇଟ୍ ଅନ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ ବି ହୁଏ ୟୁକ୍ରେନ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ करे ସବୁ କୋଉଠିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ करे ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ करे ସାହାରାନ ସବ୍ ସାହାରାନ कंट्रीज ଯୋଉଠି କିଛି ହୁଏନି तो ये जो ब्लैक सी टा इंपोर्टेंट ट्रेड रूट था ये जो कैच स्ट्रेट टा इंपोर्टेंट ट्रेड रूट था 2-3 करेक्ट अछि 1 रॉन्ग अछि एटा एथुरु आसीची जो एबे टैक्स गुडक चलीची आगुरु चलीची 3-4 वर्ष हो गला डियोगो ग्रासिया आइलैंड recently seen in the news located in which of the following oceans डियोगो ग्रासिया आइलैंड्स Diego Garcia Islands गुड़ाक fishermen were detained near Diego Garcia Island for crossing maritime boundary and poaching. ओके एटा कोठी अछि कहलो चागोस आर्किपेलागो रे अछि हमें ओडे मैप रे से जो पढिथिले मने पकाओ जियोमॉर्फोलॉजी रे ही पढिथिले हमें भारतरु तळकु लाइठी कोन उठे हमर जो रिच एक्सटेंड करूछि बोली हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म रे पढिथिले ओके गोटे रिज एक्सटेंड करुछि बोली जहाँ को चैगोस लाकाडिव रिज बोली कहा जाए जहाँ ऊपर एठी लक्षद्वीप अछि एठी मालदीव्स अछि आ तळे गोटा आइलैंड अछि चैगोस आइलैंड सब गुडा को टाइप रो आइलैंड गुडा दे आर कोरल द्वीप्स गुडा कोरल द्वीप आइलैंड चैगोस आइलैंड से चैगोस आइलैंड गुडा को कहाँ अंडर रे जाउछि गुडा को यूके अंडर रे जाउछि एबे करंट अफेयर न्यूज रे थिला ना जे यूके आउ फ्रांस भितर ता भितर चर्चा चली छी ट्रांसफर को नै ओके फ्रांस ना स्पेन भितर एमती गोटे न्यूज रे थिला करंट अफेयर्स ओके लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ चागोस आर्किपेलागो सेठी 2-4टा आइलैंड अछि कि 8-10टा आइलैंड अछि जहाँ भी अछि सबुठु तळ जेमती हमर लक्षद्वीप रो सबुठु तळ आइलैंड रो ना कोन यूनिक होय अंडमान निकोबर सबुठु तळ आइलैंड रो ना कोन ग्रेट निकोबर सिमिलरली चागोस आइलैंड रो सबुठु तळ आइलैंड साउथ आइलैंड रो ना होछि डियोगो ग्रासिया ओके तो सेठी जो समुद्र रो भी स्पेसिफिक मैरीटाइम बाउंड्री था ना ताको क्रॉस कला बेले से जो आइलैंड रो जो माने मालिक अछंती किबा जो कंट्री ता यूके वाला जो तांकर सैन्य जगह की बस तो माने ताको अरेस्ट करी ओके साउथ इंडियन ओशन यूके यूएस भी करेक्ट ना हाइड्रोक्लाइमेटिक whiplash हाइड्रोक्लाइमेट whiplash गुडे न्यूज देथिला एटा गोटे घटना जो कौन हुए सडन एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन हुए वेट एंड ड्राई वेदर कंडीशन ट्रिटी ऑफ पेरिस रे फ्रांस का यूके को देथिला डियोगो हमर चैगोस आइलैंड्स हाइड्रोक्लाइमेट whiplash a process involving rapid melting of polar ice caps due to climate change, a weather condition where hurricanes, cyclones occur simultaneously, a phenomenon where droughts are prolonged over decades due to global warming. Okay, hydroclimate whiplash कहाँ को कहा जाए? Okay, एटा कोटू आसी जो जंगल रे निया लागे सेटू आसी वाइल्ड फायर्स हैव डिवास्टेटेड लॉस एंजेलिस यूएस रे लागी थिला मन अछि ना लॉस एंजेलिस okay surrounding areas driven by rare meteorological conditions exacerbated by global warming hydroclimate whiplash माने एक्सेस वार्मिंग हेबा जगु बहुत बेसी गरम हेबा जगु ओके
our hydroclimatic whiplash जो hydroclimatic whiplash माने कौन कहलो increasingly frequent and intense swings between periods of extremely drought and periods of extremely heavy rainfall and flooding माने बारंबार बारंबार चेंजेस हुए हला केते बेले कोन हो जाउची सेही सीजन रे माने बहुत बेसी वर्षा होची फ्लडिंग होची एटसेट्रा होची आरो वर्ष सेही सीजन रे कोन हो जिवो ड्राई कंडीशंस क्रिएट ओके क्लाइमेट चेंज एगुड़ा को बेसी इंटेंसिफाई होची कहा द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होची बोली रेनफॉल कमी जाउची एटसेट्रा ड्राई इवेंट्स रा मात्रा बढ़ुची Musi river originates in Anantagiri hills of Telangana and is a tributary of Krishna river. Anantagiri hills ru bahari chi Telangana re tributary Krishna river. Okay, Osman Sagar. Okay, Himayat Sagar reservoirs formed on Musi river serves as major water source for Hyderabad. Hyderabad re flooding भी हुए Musi river जो monsoon season रे न्यूज रे था एटा Hyderabad, Telangana have been included in the prestigious 2025 World Monuments Watch by a World Monuments Fund. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गोटे होची माने छोटिया धरणर बेसी बड़ न न्यूयॉर्क रे अछि गोटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मोनुमेंट्स फंड बोली ओके से कोन करछि हैदराबाद रो जो मुसी रिवर आउ तार आखा पाखी रीजन्स मान को इंक्लूड करछि कोन 2025 वर्ल्ड मोनुमेंट्स वॉच रे इंक्लूड करछि okay that seeks to raise awareness and mobilize action for the preservation of cultural heritage under threat due to challenges in climate change urbanization natural disasters माने माने प्रमोट करंती जे विभिन्न प्रकार जो कल्चरल हेरिटेज अछि विभिन्न संस्कृति अछि समान को केमती प्रिजर्व करा जैतियो समान को माने सरे जीवार केमती बचा सेटा मे भी क्लाइमेट चेंज जो मुसी रिवर ई आखरे पाखरे थिवा रीजन सुडा को जोटा डिस्ट्रॉय होछि की नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड ड्रॉट्स एटसेट्रा ई अर्बानाइजेशन तो गोटे टाइप रो डिवास्टेशन ना ओके तो सेठी पे एटा मुसी रिवर टा न्यूज रे थिला कृष्णा रा गोटे ट्रिब्यूटरी होची मुसी रिवर हैदराबाद रो ये होची लाइफलाइन अरे रमेश तुम कोन एते शीघ्र पळे आसिला आज 5 स्टार खाई देथिलो कि बोथ आर करेक्ट होची तो with reference to Gulf of Aden, which of the following statement is are correct? Located between Yemen on Arabian Peninsula, Somalia in Horn of Africa. It connects the Arabian Sea to Red Sea through Bab el-Mandeb Strait. गल्फ ऑफ आडेन से अफ्रीका काली कहिथिले ना गल्फ ऑफ आडेन बाबल मंदिर स्ट्रेट कहिथिले गल्फ ऑफ आडेन कहिना पड़ी जो ना आगर जे हमर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अछि हॉर्न ऑफ अफ्रीका रे बा ईस्टर्न अफ्रीका रे जो पेनिनसुला टा अछि ताको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहवा जाय एथरे सोमालिया अछि ओके एरिट्रिया अछि जिबोती अछि तापर एपटे कोन अछि हमर आ गोटे कंट्री जो डी रेमन डी सी एरिट्रिया इथियोपिया सोमालिया इथियोपिया जिबोती एरिट्रिया जिबोती चारटा कंट्री एमान को नेकी जो पार्टटा तयारी दिया को पेनिनसुला टा को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोली कुआ अफ्रीका यार ए साइड रे रेड सी टा अछि एटा रेड सी अछि याडे सऊदी अरेबिया अछि बा अरेबियन पेनिनसुला अछि ओके इन बिटवीन देम जो स्ट्रेट टा अछि को बाबल मंदिर स्ट्रेट कुआ जाय बोली काली कहिथिले एई जगह रे सोमालिया पाखा पाखी
एटी माने बाबल मंदिर स्ट्रेट भितर एटी गोटे जगह एई भलिया माने पसी जाइछ भितर को पसी की अछि और गल्फ बोली कुआ गल्फ ऑफ आडेन। गल्फ ऑफ आडेन इज फेमस एज व्हाट पायरेट्स एलाई पढ़िथिले ना ज्योग्राफी रो वर्ल्ड ज्योग्राफी रे पढ़ाई पायरेट्स एलाई बोली कुआ ओके इट इज फेमस एज पायरेट्स एलाई। सोमालिया रो पायरेट्स माने समुद्री लुटेरे समुद्री डाकू माने बहुत उत्पात मचा हाउती ट्राइब्स माने भी विषय भी पढ़िथिले एबे रिसेंटली येमेन आउ अरबियन पेनिनसुला रे हां गल्फ ऑफ आडेन टा माने याडे जोटा अछि साइड टा येमेन अछि ना याडे येमेन अछि ऑन द अदर साइड जोटा अछि सेटा होछि सोमालिया जिबोती अछि इट कनेक्ट्स द अरेबियन सी टू द रेड सी थ्रू बावल मंदेब स्ट्रेट ओके करेक्ट अछि किंतु टिके मोर डिटेल्स रे देखि दवा rising threats of Gulf of Aden, Red Sea, Eastern Africa waters have led to Indian Navy to enhance the presence and ensure sea routes माने सेठी प्रॉब्लम करजंदी हाइती ट्राइब्स माने ए जो सोमालियन पायरेट्स माने अब सेठी बा इंडियन नेवी बड़ स्टेप्स गुडा का नैछि आ सेठी जगिबा एटसेट्रा पेट्रोलिंग करिबा ओके दुई वाटर गल परमाने गल बाकी ठीक अछि बोले ऑल आर करेक्ट बोथ वन एंड Nord Stream is a major subsea gas pipeline system spanning approximately 1200 km designed to carry gas from Russia to Europe through which of the following seas? Nord Stream. नॉर्थ स्ट्रीम हो गोटे गैस पाइपलाइन समुद्र तले जाइथिबा गोटे पाइपलाइन टा जोटा कि 1200 किलोमीटर लंबा अछि ओके रशिया रो यूरोप को ये पाइपलाइन सब कोन गैस सप्लाई करूछ कारण ना रे भी तुमे कोन किछि क्लू पाइ जिवो ना रे भी क्लू पाइ जिवो तुमे जदि ज्योग्राफी ठीक से टिके पढिछ नॉर्थ रे वर्डटा आसी नॉर्डिक कंट्रीज माने नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज माने लाइक कोन नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ओके आइसलैंड ग्रीनलैंड डेनमार्क ए वाला कंट्रीज माने को नॉर्डिक कंट्रीज को आले जो गुडा का बाल्टिक सी ऊपर अछि सबुठु उत्तर रे थिबा सी भीतर कोटा बाल्टिक सी टा ओके बाल्टिक सी टा होती सबुठु उत्तर रे अछि ओके नॉर्थ सी बाल्टिक सी टा Nord Stream subsea pipeline leaks okay, released as estimate thousands of metric tons of methane into the atmosphere. एटी कोन आइछि उटे लीक हेतिला रिसेंटली जनवरी ओके मीथेन माने कोन उटे ग्रीन हाउस गैस ना नै एटमॉस्फेयर को रिलीज हेछि एतिकी मेट्रिक टन रो मीथेन हम भाबो आउ कोन तुमे 2050 जो रखिछ कोन सेटा नेट जीरो एमिशन भारत गला सत्यानाश हे गला यूरोप वाला Nord Stream is a major subsea gas pipeline system spanning across 1200 km under the Baltic Sea. Russia to Europe transport करूछ ओके जोटा कि रशिया करूछि आ वेस्टर्न साइबेरिया रु रशिया कोन ताको करूछि ट्रैवल करूछि यूरोप रशिया टा गुटे बड़ प्रोड्यूसर गैस नेचुरल गैस आई थिंक रशिया इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर नेचुरल गैस यूएस चेक करी अब कोई 2011 रे तार पार्ट 1 कंप्लीट हेतिला 2012 21 रे तार पार्ट 2 कंप्लीट जर्मनी जाय कनेक्ट करूछि पूरा रशिया टू जर्मनी एगला एबे 3 घंटा पर पुनी देखा हवा ए क्वेश्चन सारी दवा आ पुनी अन्य क्वेश्चन स्टार्ट करिया दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू